Let us see the next question. You don't have to write anything, let me explain you. In March 2020, XYZ Bank sold some 7% interest rate futures underlying, highlight the portion, notional 7.5% coupon bond. The exchange provides the following details of the eligible securities that can be delivered. Security is given 7.96, that is the coupon rate. GOI 2023 means this is the rate of interest and this is the time period of the maturity. Rate of interest, time period of maturity. Rate of interest, time period of maturity is provided to us. Quoted price of the bond is given and conversion factor is given. Recommend the security that say that should be delivered by XYZ Bank if futures settlement price is 1000. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का हेडिंग लिख दो आप CTD. It is cheapest to deliver bond. Friends, we understand that say in this question information is provided to us that XYZ Bank has entered into the transaction for short position. Short position क्या एंटर किया उन्होंने? टू सेल नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड. व्हाट इज द सेटलमेंट प्राइस? 1000. तो यहां पे as all of you would that is say definitely understand, it is the futures contract. So the futures contracts are standardized, it is entered upon through exchange. तो आपने क्या किया है? एक्सचेंज में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है in which say you are supposed to sell the security having rate of interest of 7.5% at the rate of 1000. Now when you are going to sell the security at that point of time, of course you need to buy the security. आप security buy करोगे और जो भी प्राइस agreed upon है वो प्राइस पे आप सेल करोगे. That is the way you are going to have the square off of the futures contract, and difference of both of them is the profit or loss that you will have. Now since this is a notional security, so what happens that say that kind of security does not exist in the market at all. So stock exchange allows you to deliver one of the security which they have approved. So they will give you a list of deliverable securities. So from the basket of the securities, so you can deliver any of the security. So we have been provided with this basket of the securities, and from these securities you can pick any one security to settle the original futures contract which you had entered upon to sell the security at the rate of 1000 for 7.5% bond. Like that, say the question we have to understand. Now you may have a point that sir we can purchase any of the security to deliver. The answer is yes. Then in that case we understand that say the best thing that say we deliver the security which is having the lowest price, because that is the price at which say I will buy the security and say I will be able to make the maximum gain. Is it like this? The answer is no. What happens that say over here, listen carefully, over here you had a commitment say to sell the security having coupon rate of 7.5%. Now if at all you sell a security which is having say the lower coupon rate, then in that case the sale value that say you will receive will be comparatively less. Basically what happens that say since it is the notional security, that kind of exact security is not available in the market, and you are allowed to purchase one of the deliverable security from the market to deliver against the short position in which you had entered upon. तो जो आप ये अपना contract square off करोगे at that point of time, what will happen? We understand that say you are going to buy the security apparently जो सबसे cheap है,
पर उसमें क्या होगा से आपको जो सेल वैल्यू मिलेगा ना फ्रेंड्स, वो भी कंपेरेटिवली कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा सिक्योरिटी जो दे रहे हो जिसका लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ओके, तो कितना पैसा मिलेगा? तो अगेन द स्टॉक एक्सचेंज विल गिव यू अ कन्वर्जन फैक्टर। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना फ्रेंड्स, उसको हमें ये फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विल बी द सेल वैल्यू माइनस दिस इज द परचेस वैल्यू। दिस इज द वे यू विल बी हैविंग द प्रॉफिट और लॉस इफ एट ऑल यू डिलीवर दिस सिक्योरिटी। वी अंडरस्टैंड लॉजिकली, मैंने जो उनको कमिट किया था उससे अगर मैं बेटर सिक्योरिटी देता हूं, यानी कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो क्या मुझे ज्यादा सेल वैल्यू मिलेगा? आंसर इज यस, पर उसका परचेज प्राइस भी ज्यादा होगा। अगर मैंने बेटर सिक्योरिटी दिया तो क्या मुझे सेल वैल्यू ज्यादा मिलेगा? हाँ, देखो कन्वर्जन फैक्टर ज्यादा है, उसका परचेज प्राइस भी ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मैंने उनको अच्छा सिक्योरिटी नहीं दिया, यानी कि सपोज मैंने उनको ऐसा सिक्योरिटी दिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम है, तो उसका भाव कम होगा, बट उसके सामने क्या मुझे कन्वर्जन फैक्टर 1 से कम मिलेगा। तो क्या करने का सर? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द सिक्योरिटी। अगर ये सिक्योरिटी खरीद के डिलीवर किया तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ये सिक्योरिटी खरीद के सेल किया तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ये सिक्योरिटी खरीद के सेल किया तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, उन सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेल वैल्यू क्या लेंगे, एकदम गौर से सुनो, सेल वैल्यू क्या लेंगे, ये 1000 इंटू कन्वर्जन फैक्टर, वो सेल वैल्यू लिया जाएगा, और ये कोटेड प्राइस को परचेज प्राइस लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको हर एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो आप सेलेक्ट करोगे। हर एक में लॉस हो रहा है, तो जिसमें सबसे कम लॉस है वो आप सेलेक्ट करोगे। कॉम्बिनेशन हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसको सिलेक्ट करोगे। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये कन्वर्जन फैक्टर भी जो है ना फ्रेंड्स, दैट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज ओनली, हमको कैलकुलेट करने का नहीं होता है। ऑफकोर्स वो कैलकुलेशन का प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस या सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम लोग समझते हैं, दैट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विच इज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर होगा। हाँ, वैल्यूएशन में कुछ और नहीं होता है, बट वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर ये हमको करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमको हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा होगा, और प्रैक्टिकली से जब एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होता है तो स्टॉक एक्सचेंज भी ये कोटेड प्राइस हमको रेडीमेड दे रखता है। आई जस्ट गिव यू सम एक्सप्लेनेशन, आपको कुछ लिखना नहीं है अभी, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा है, देखियो 7.96 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 बॉन्ड, उसका कोटेड प्राइस है 1037.5, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस हो जाएगा। और मेरा सेल वैल्यू क्या होगा, 1000 रुपये का जो सेटलमेंट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है वो इंटू 1.037, तो ये मेरा सेल वैल्यू हो जाएगा। तो 1000 इंटू 1.037, सो 1037 माइनस 1037.4, so of course it comes to loss of 40 पैसे। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6.25%, उसमें सेटलमेंट प्राइस क्या दे रखा है आपने, सॉरी कन्वर्जन फैक्टर क्या दे रखा है, कन्वर्जन फैक्टर 0.906, यानी क्या होगा, आपको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, आप सिक्योरिटी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वो दे रहे हो, देन इन दैट केस आपको सेल वैल्यू भी कम मिलेगा। सो 0.906 into 1000 is 906 minus 926.4, that comes to 20 rupees 40 paise loss, and so on. We are required to make the calculation of the profit or loss for each of the security. Chalo, heading write down, calculation of profit or loss for each security. I request you to complete the table. Chalo, let us start further.
then 6.80 is the rate of interest. Government of India 2029 bond. Friends, in our chapter of the security valuation, we do all these valuation procedure. In that case, it is 1000 into 0.9195 minus 877.5. So 919.5 minus 877.5. So there is a profit of rupees 42. Next is 6.85. Government of India 2026 bond. In that the conversion factor is 0.9643. So 964.3 and 972.3. That comes to 8 rupees negative. That is loss of 8 rupees. Next is 8.44. Government of India 2027 bond. It is 1.1734 into 1000. So 1173.4 minus 1146.3. So 1173.4 minus 1146.3. So there is again a profit of 27.1. I'm sorry, there is a loss of 27.1. Then it is, okay, there is a profit. Then it is 8.85 percentage. Government of India 2028 bond. So 1000 into 1.2428. So 1242.80, and this is 1201.70. That comes to 41 rupees and 10 paise. So we have a situation of the profit or loss. Of course, we understand that say the highest profit will be selected, and the highest profit comes in 6.8%, Government of India 2029 bond. So the company would be advised to deliver Government of India 2029 bond, and with that say you will be able to make the maximum profit. I am reading certain content from the module. It is the chapter number 11, interest rate futures. As per Investopedia, an interest rate futures is a futures contract with an underlying instrument that pays interest. An interest rate future is a contract between the buyer and the seller agreeing for the future delivery of an interest bearing asset. The interest rate futures allows the buyer and the seller to lock the price in the interest bearing asset for a future date. तो जैसे हम लोग समझते हैं डेट से द फ्यूचर्स में हम लोग सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं. अगर मेरे को लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है एंड आई एम गोइंग टू बोरो, देन आई सेल इंडेक्स फ्यूचर्स, उसकी बात कर रहे हैं. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट विल मूव इन एडवर्स डायरेक्शन. तो इन्वेस्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा वो एडवर्स है, और बोरोवर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वो एडवर्स है, causing a cost to the company. For example, borrower faced the risk of the interest rate rising. Futures used to inverse relationship between the interest rate and the bond price. तो जैसे हमने समझा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो इंटरेस्ट फ्यूचर्स हो जाएगा 95, 100 minus 5, to hedge against the risk of rising interest. A borrower will enter to sell a futures today. Then if the rate of interest rise in the future,
the value of the futures will fall as it is linked to the underlying asset bond price, and hence the profit can be made when closing out the future, यानी जब आप square off करोगे. Currently, interest rate futures segment on the National Stock Exchange offers two instruments: futures on 6-year, 10-year, 13-year Government of India security and 91 days Government of India Treasury bill. Bonds from the underlying instrument not offer interest rate. Further, interest rate future settlement is done. Now, this is the important point. Settlement is done in two levels. One, mark-to-mark settlement done on the daily basis, and second, physical delivery which happens on any day of the expiry month. तो ये जो physical delivery ना उसका भी हम लोग पढ़ रहे थे. Final settlement can happen only on the expiry date. The price of the interest rate future determined by the demand and the supply interest rate are inversely related to the price of the underlying bond. In interest rate futures, following are the two important terms. एक कन्वर्जन फैक्टर. तो कन्वर्जन फैक्टर का लॉजिक हमने क्या समझा कि हमने बात किया था कि हम लोग 7.5% वाला कूपन रेट वाला सिक्योरिटी आपको देंगे जो कि नोशनल है, पर 7.5% वाला मार्केट में अवेलेबल नहीं है. मैंने क्या किया, 6% वाला उठा के दे दिया. देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड दैट से मुझे सेल वैल्यू कम मिलेगा. यानी क्या होगा, मेरा जो सेटलमेंट प्राइस 1000 है ना, उसमें वो कन्वर्जन फैक्टर लगेगा 0.80, 0.90 समथिंग लाइक दैट. क्यों? क्योंकि 6% 7.5% से कम है. अगर मैंने अच्छा सिक्योरिटी दिया, 7.5 की जगह मैंने 8% वाला सिक्योरिटी दिया, देन इन दैट केस मुझे कन्वर्जन फैक्टर 1 से ज़्यादा मिलेगा. ऑल द डिलीवरेबल बॉन्ड्स, जो वो लिस्ट था उसकी बात कर रहे हैं, हैव डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड द कूपन रेट्स. जैसे हमने देखा 2023, 2025, 2029, तो क्या बता रहा है, अलग अलग मैच्योरिटी है. कूपन रेट 7.96, 6.55, 6.80, तो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है. टू मेक देम कंपेरेबल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू विद द नोशनल बॉन्ड जो हमको फर्स्ट टाइम में दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इन कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर फॉर ईच डिलीवरेबल बॉन्ड and for each expiry at the time of the introduction of the contract is published by National Stock Exchange. तो conversion factor into futures price, तो जो हमारा सेल वैल्यू का कॉलम था उसकी बात कर रहे हैं, is the actual delivery price for a given deliverable bond. cheapest to deliver, तो ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, सेल वैल्यू क्या मिलेगा वो ऊपर हमने बताया, यानी ए पार्ट में कोटेड प्राइस विल बी द परचेज प्राइस. तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. लॉस है तो सबसे कम वाला लॉस हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दैट इज चीपेस्ट टू डिलीवर. प्रॉफिट है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला, उसको भी चीपेस्ट टू डिलीवर ही बोलते हैं. प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट, उसको भी चीपेस्ट डिलीवर बोलते हैं. द CTD इज द बॉन्ड दैट मिनिमाइजेस द डिफरेंस बिटवीन द कोटेड स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस एडजस्टेड बाय द कन्वर्जन फैक्टर जो उन्होंने ऊपर बताया है. It is called cheapest to deliver bond because it is the least expensive bond in the basket of the deliverable bonds. The cheapest to deliverable bond is determined by the difference by the cost of acquiring the bond, यानी quoted price, and the delivery of the price received by the delivery of the acquiring bond, यानी ऊपर वाला price, settlement price into conversion factor. The difference gives the profit or loss of the seller of the futures bond. फुलन ने सिर्फ फॉर्मूला बताया है. द बॉन्ड इज चोजन एज से द चीपेस्ट डिलीवरी बॉन्ड विच आइदर मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट और मिनिमाइजेस द लॉस. सो राइट डाउन वन लाइन आंसर. XYZ बैंक should deliver 6.8% GOI 2029 bond.